Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Yeah, today we are going to see a new chapter from your pharmacology, and that is nothing but the autocoids. And from that we are going to see histamine and antihistaminic drugs. So it's a very simple chapter from pharmacology, and you can expect at least 2 or 3 questions from this chapter again. So autocoids, and we'll see the histamine and antihistaminic drugs. Tomorrow we'll see the drugs used in the peptic ulcer, right? So just for a change, pharmaceutics चालू है अपना, बट फार्मास्यूटिक्स में अगर आपको बोर हो रहा है तो फिर फार्माकोलॉजी यहाँ पे मैं बीच में लूँगा, ठीक है? तो फार्माकोलॉजी autocoids. So first of all, what do you mean by autocoids? So autocoids is the term that means self-releasing or self-controlled, self-releasing or self-controlled. So what do you mean by autocoids? They are the self-releasing hormones. They are the self-releasing hormones. Now these hormones are synthesized, released locally in the different tissues or cells. So these are the autocoids, means self-releasing hormones. They are synthesized locally and they has a physiological role. They has a physiological role. ये ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं? ऑटोकॉइड्स मतलब सेल्फ रिलीजिंग हार्मोन, खुद से ही रिलीज होते हैं, खुद से ही रिलीज होंगे, खुद से मतलब देयर माइट बी सम ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, वो उनको रिलीज करते रहेंगे. तो ऑटोकॉइड्स मतलब सेल्फ रिलीजिंग हार्मोन्स, एंड दे आर सिंथेसाइज्ड, स्टोर्ड एंड स्टोर्ड लोकली, एंड दे आर रिलीज्ड अपॉन ट्रिगरिंग फैक्टर्स, एंड दे हैव सम सॉर्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रोल. इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल रोल है. तो ऑटोकॉइड जो है ऑटोकॉइड्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर केमिस्ट्री. तो ऑटोकॉइड्स का क्लासेस केमिस्ट्री के बेसिस पे होता है कि कोई अमाइन है, कोई लिपिड है, कोई पेप्टाइड है ना. सो अमाइन ऑटोकॉइड, तो अमाइन ऑटोकॉइड कौन है? अमाइन ऑटोकॉइड्स लाइक हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन. सेरोटोनिन को अपन बोलते हैं 5-hydroxytryptamine. Serotonin means what? 5-HT. 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 So amine autocoids, histamine and serotonin. Serotonin is known as a 5-HT or also known as a 5-hydroxytryptamine. ठीक है. बाद में lipid autocoids based upon their chemistry. Lipid autocoids. So here you will have prostaglandins, leukotrienes, then a platelet activating factor. So these are the lipid in nature. So amine autocoids, histamine, serotonin, lipid autocoids. So prostaglandin, leukotrienes and platelet activating factor. Some of them are a peptide in nature, protein in nature. So peptide autocoids. Peptide कौन है? Bradykinin, angiotensin, calidin and angiotensin 1, 2, 3. So all they are the peptide autocoids. They are the self-releasing hormone synthesized and stored locally. They have some sort of physiological role. They are released upon some triggering factor, है ना. तो mostly out of these autocoids, mostly important क्या है? Histamine and serotonin, right? Histamine, serotonin and some bradykinin is also important little bit, but bradykinin का ठीक है. तो histamine, then your serotonin, prostaglandins, they are important.
तो histamine, prostaglandin, leukotriene, platelet activating factor, bradykinin, so they are also known as the inflammatory mediators. They are also responsible for the inflammation and pain. So release of histamine, leukotrienes, bradykinin, okay, serotonin, prostaglandin, they are responsible for the inflammation and pain, because ये जो हार्मोन्स है लोकली रिलीज होते हैं एंड दे सेंसिटाइज द नोसिब रिसेप्टर, जो आपके पेरिफेरल रिसेप्टर्स होते हैं पेन के लिए, पेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन. So these particularly histamine, prostaglandin, and then your bradykinin, they sensitizes your peripheral receptor of pain, nocib receptor, or the nocib receptor, and they causes the pain. This histamine, prostaglandin, they increases the permeability of blood vessels and they causes the inflammation and edema. Histamine, prostaglandin, leukotrienes, platelet activating factor, ये सब किसके लिए responsible है? All they are responsible for the pain, inflammation, edema, then bronchoconstriction. Bronchoconstriction is caused mainly by histamine, leukotrienes and bradykinin. ये histamine, leukotriene and bradykinin ये तीन सबसे ज़्यादा responsible है आपके bronchoconstriction के लिए, right? So these are the autocoids. They are self-releasing hormone. They are synthesized, stored locally, and released upon triggering factors. So first one is the histamine. कौन सा amine? Histamine. तो histamine क्या है? It is a amine. It is a synthesized in the body from histidine amino acid. Synthesized in the body from histidine amino acid. So histamine and antihistaminic drugs, है ना? So histamine is also known as a tissue amine. Histamine is known as a tissue amine, also known as a biogenic amine. Histamine is also known as a tissue amine or biogenic amine. Why it is known as a tissue amine? Because it is a Greek word. Histo is the Greek word for tissue. तो हिस्टो नाम का जो ग्रीक वर्ड है वो दर्शाता है आपको टिश्यू, है ना, टिश्यू. Histamine is derived from the one term known as a histose. Histose मतलब क्या होता है? In the Greek, histose means tissue. As this histamine is mostly found in the various tissues, so that's why it is also known as a tissue amine. तो याद रखना है आपको, histamine is also known as tissue amine. क्यों? Because histamine, so term histamine is derived from the term histose. Histose is a Greek word and that indicate the tissue. So it is found in the tissues. So that's why tissue amine or biogenic amine. So it is a potent biogenic amine. It is a nothing but the beta. It is nothing but the beta imidazolil ethyl, है ना, ethyl amine. Beta imidazolil ethyl amine. तो ये imidazole है ना, 1,3 नाइट्रोजन, 1,3 नाइट्रोजन, ये 1 हो गया, ये 3 हुआ है. तो imidazole है ना, beta imidazolil ethyl amine, CH2 and amine, ethyl amine, right? So this is a tissue amine found in the almost all tissues, so almost distributed widely in the plants and animals, also present in the venoms of some bees and wasps. जो मधुमक्खी होता है उसके वेनम में, कीड़े मकोड़े के वेनम में ये histamine पाया जाता है. So distributed in the plant and animals, found in the venoms of bees and wasps. Now how it is made in the body, ये बनता कैसे है बॉडी में? So it is a formed by decarboxylation of amino acid known as a histidine. तो histidine amino acid जो है आपका, है ना, histidine amino acid जो है, यहाँ पे histidine amino acid में COOH को पकड़े, यहाँ पे COOH. So this is removed known as decarboxylation. So formed by decarboxylation of histidine amino acid,
and by the enzyme histidine decarboxylase. Histidine decarboxylase. Now it is present in the various body tissues, like mostly ये कहाँ पे होता है? Majorly histamine is present in the lungs, then GIT gut, then skin, okay, and in the brain. But in the lungs, gut or skin, it is stored in the basophils as well as it is stored in the mast cell. मास्ट सेल जो होते हैं, बेसोफिल्स जो होते हैं, उसमें ये स्टोर होता है हिस्टामाइन, ठीक है. बट ब्रेन में क्या है कि ब्रेन में मास्ट सेल नहीं होते, सो ब्रेन डजंट हैव एनी मास्ट सेल. सो इन द ब्रेन हिस्टामाइन एक्ट एज अ न्यूरो हार्मोन और न्यूरो ट्रांसमीटर. तो ओके, बाकी जगह पे ये क्या करता है? ऑटोकॉइड एज अ एक्ट करता है, बट इन द ब्रेन इट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर. बिकॉज in the lungs, in the GIT, in the skin, so it is stored in the mast cell, it is stored in the mast cell, you know. But in the brain you don't have mast cell, in the brain you don't have a mast cell, so in the brain it will act as a neurotransmitter, right? So in the mast cell histamine is always stored along with the heparin. Remember, heparin and 5-hydroxytryptamine. And in the mast cell histamine is always stored with the 5-hydroxytryptamine and heparin. तो जैसे आपका ल्यूकोसाइट होता है WBC में एक आपका एक ल्यूकोसाइट टाइप ऑफ का बेसोफिल. There is one basophil. In the basophil granules you will find this heparin and histamine also found in the circulating basophils, right? Now it act on a different receptor. इसके रिसेप्टर होते हैं हिस्टामाइन 1, 2, 3, है ना. हिस्टामाइन 1, 2 which are GPCR in nature. Histamine 1, 2 and 3 which are GPCR in nature, and histamine 3 receptor is a ion channel. तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं which of the following histamine receptor is a ion channel in nature. Remember histamine 3 receptor is a ion channel. So histamine 1, 2, so that is a G protein coupled receptor, or you can say it is a serpentine receptor. But histamine 3 receptor क्या होता है? आयन चैनल होता है, आयन चैनल. रिमेंबर 5UST भी वैसे है. सो 5UST में सेरोटोनिन में 5UST 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रिसेप्टर होते हैं. तो आउट ऑफ दैट 5UST 3 जो होता है आयन चैनल होता है. उसके ऊपर तो अभी तक 4 बार क्वेश्चन आ चुका है. तो 5UST 3 इज आयन चैनल, बट रेस्ट ऑफ द 5UST रिसेप्टर 5UST 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 all are GPCR, but 5UST 3 and histamine 3 receptor are ion channel. Remember, क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है. अगेन यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? सो histamine is synthesized from histidine amino acid. ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है. Histamine is biosynthesized from histidine amino acid in the lungs, brain, है ना, via histidine decarboxylation. इसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इट इज अ बीटा इमिडाजोलिल इथाइल अमाइन. दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस, राइट. सो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. सो ऑटोकाइड्स, एज आई टोल्ड यू, ऑटोकाइड्स मींस सेल्फ रिलीजिंग हार्मोन. so they are a self releasing hormone. Triggering factor will cause release of them, and they have their different function, as I told you, like histamine, bradykinin, leukotrienes, serotonin. So they causes pain, inflammation, edema, increase in the blood vessel permeability, vascularity, edema. In the brain, it is a neurotransmitter. So their agonists are not much of use, but their antagonists are having pharmacological use. Some of them also, some of their agonists is also used in therapeutics, just say 5-ST, right? Like that. So what are the different autocoids, right? So first one is a histamine. So histamine has its receptor like H1, H2, H3. Mostly histamine exerts their action by H1 and H2, क्योंकि H1 H2 रिसेप्टर जो होते हैं
वो टिश्यूज में होते हैं, H3 जो होता है वो ब्रेन में होता है। H3 इज अ ऑटो रिसेप्टर, रेगुलेट द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन इन द ब्रेन, ठीक है। तो H1 H2 रिसेप्टर के थ्रू ये एक्ट करते हैं। नाउ H1 receptor is present in the rest of the body tissue, but H2 receptor कहाँ पे होता है? H2 receptor is mostly found in the heart and your stomach, responsible for the increase in the gastric acid secretion. H1 receptor blockers है ना, for example diphenhydramine, chlorpheniramine, cetirizine, loratadine. We are going to see the detail of this classification also. Histamine 2 receptor blocker like ranitidine, famotidine, roxetidine. Ranitidine, famotidine, roxetidine. They are used in the ulcer, peptic ulcer. तो 5UST और 5UST मतलब क्या? सेरोटोनिन. So there are at least 7 to 8 receptor. 5UST 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, like that. So out of that 5UST 3 is a ion channel. Rest of are GPCR. ठीक है, तो याद रखना है GPCR कौन है? 5UST3 as well as your histamine receptor 3. So 5UST3 receptor is a ion channel. So 5UST or serotonin agonist like sumatriptan, buspirone and then dexphenpluramine. So sumatriptan is drug used in the treatment of migraine. ये migraine में यूज होता है. It is a drug of choice in acute attack of migraine. Buspirone is also used in the migraine, also antipsychotic. और ये dexphenpluramine is a appetite suppressant. Then 5UST receptor blockers like ciproheptidine, ketanserin, ondansetron, all they are used as a, तो ondansetron जो है it is a prokinetic drug, it is anti-emetic. ये anti-emetic होता है. ketanserin, ciproheptidine क्या है? It is a appetizer. ये भूख बढ़ाने में हेल्प करता है. It is also histamine 1 receptor blocker. Then third type के है ना, third है ना, first autocoid is a histamine, second autocoid is a serotonin, third autocoid is a nothing but the prostaglandin, lipid in nature, prostaglandin. So prostaglandins there है ना, they also has a role in the pain, inflammation and fever, as well as also has a protective role in the stomach. So there are analogs like misoprostol, dynaprost and carbaprost. Prostaglandin synthesis inhibitor कौन है? जो NSAIDs होते हैं, all they are the prostaglandin synthesis inhibitor. Kinins जो होते हैं मतलब bradykinin, calidin वगैरह, so they will act on their receptor known as B1, B2, bradykinin, calidin, right? So bradykinin mostly found in the lungs, है ना. Their antagonists are being developed because bradykinin is involved in the cough. The next होता है leukotriene. So in the leukotrienes, they also present in the lungs and they cause the bronchoconstriction. So leukotriene antagonists are used as the drugs used in the asthma. We already seen. So montelukast, zafirlukast, you know, lipoxygenase inhibitor Zoltone is also there, which inhibit the synthesis of leukotriene. ये synthesis inhibitor होता है. Now angiotensin. So you know that angiotensin 1, angiotensin 2, they are also biogenic amine. जैसे they are made by the renin, है ना. Renin will act on angiotensinogen, will convert angiotensin 1 to 2, 2 to 3 like that. So their blockers, angiotensin receptor blockers like sartan, losartan, valdesertan, ibrasartan, they are antihypertensive and synthesis inhibitor. So these ACE inhibitors, they will prevent the synthesis of angiotensin. Captopril, napril, ramipril, है ना. मतलब इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर ले रहा हूँ मैं, और वहाँ पे लोग उनको क्या इम्पोर्टेंट है, क्या बोलते हैं, IPL इम्पोर्टेंट है. जैसे आपका कोई मामी का लड़का है, मामा का लड़का खेल रहा है, या फिर आपका कोई भाई खेल रहा है, या फिर आपका कोई जीजा जी खेल रहा है, इतना शिद्दत से वो IPL में जाके बैठते है ना. तो जो लेक्चर इम्पोर्टेंट है वो छोड़ो, है ना, उसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं ना. Next again, so histidine amino acid, it is a decarboxylated to histamine. Histamine is metabolized by two enzymes. First one is a
N-methyl transferase, and second one is a diamine oxidase. Now N-methyl transferase will metabolize histamine into N-methyl histamine. बाद में उसका ऑक्सीडेशन हो गए मिथाइल इमेडाजोल एसिटिक एसिड, and then diamine oxidase will convert histamine into imidazole acetic acid. That is a degradation product of your histamine. Now histamine will act on a histamine receptor H1, H2, H3 or GPAT 24. GPAT 24 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. GPAT 24 में क्वेश्चन क्या आ चुका है? So how many number of amino acids domain are present in the histamine 1 receptor? Histamine 1 receptor में how many amino acid domains are present in the histamine 1 receptor? GPAT 24 में क्वेश्चन आ चुका है, and the answer is a 487. यही आंसर था, but nobody was aware of this. So histamine 1 receptor, it is GPCR, G protein coupled receptor, having 487 amino acid as a domain, and activation of this H1 receptor by histamine, that causes the activation of histamine 1 receptor by histamine causes the increase in the cyclic GMP and 3' monophosphate cyclic GMP, which results in the bronchoconstriction, vasodilation, increase the blood vessel permeability, which can cause edema, increase the blood vessel permeability, and increase the secretion. These actions are blocked by conventional antihistaminic. जो antihistaminic और histamine receptor 1 blockers होते हैं, which one receptor blocker, so they will block these actions. Remember यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऑलरेडी GPAT 24 में आ चुका है. How many number of amino acids are in a domain of histamine 1 receptor? So in the histamine 1 receptor 487 amino acid domains are there, and this is activation of histamine 1 receptor by histamine causes the bronchoconstriction, vasodilation, increased secretion. They are blocked by conventional histamine antihistaminics. मतलब conventional मतलब first generation antihistamine, right? Second, histamine 2 receptor कहाँ पे होता है? So histamine 1 receptor is present in the everywhere in the all cells and tissue. ठीक है, जैसे आपका ब्लड वेसल हो गया, स्किन हो गया, आपका ब्रोंकियल हो गया, लंग्स हो गया, तो इसमें सब histamine 1 receptor होते हैं. ठीक है, histamine 2 receptor कहाँ पे होता है? It is found in the GIT, mostly in the GIT. So present in the gastric gland, also present in the heart, and activation of this H2 receptor increases the gastric acid secretion. Histamine 2 receptor क्या करता है? Histamine will act on a histamine 2 receptor and will increase the gastric acid secretion and will cause bradycardia. ठीक है, bradycardia भी करता है ये. Now these actions are not blocked by conventional antihistamine. जो conventional antihistaminic है, मतलब जो आपके histamine 1 receptor blocker, जो first generation histamine receptor 1 blocker, they will not block the actions caused by H2 receptor. Now H3 receptor, so it is known as a auto receptor present in the brain. ये auto receptor होता है that will control the release of histamine, regulation of neuronal histamine turnover, and also neuronal functions like a cognition, control of histamine synthesis and release in the brain. Cognition के लिए hetero receptor responsible है. Inverse agonist of this है ना, inverse agonist or you can say antagonist of these receptor may increase the histamine level in the brain, leads to wakefulness. Example is a pitolisant. Pitolisant is a drug approved for narcolepsy. It is an inverse agonist to the histamine 3 receptor. Histamine 4 receptor भी होता है. Activation of this is related with the immunomodulation, immunocell response, chemotaxis, and immunoresponse and inflammation.
तो दीज आर द 4 हिस्टामाइन रिसेप्टर, याद रखना है आपको, क्वेश्चन ऑलरेडी इसके ऊपर आ चुका है। जीपैट 24 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ हिस्टामाइन। हिस्टामाइन आपके बॉडी के ऊपर क्या करता है? तो डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ हिस्टामाइन। नाउ व्हाट इज द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन ऑन अ ब्लड वेसल? तो डायलेशन ऑफ पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, तो जो लंग्स को ब्लड जाता है, ब्लड वेसल उसको डायलेट कर देगा। डिक्रीज इन द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, तो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कम हो जाएगा फिर। तो इफ देयर इज डायलेशन ऑफ pulmonary blood vessels, so what will happen? There is a decreased pressure in the decreased pulmonary artery pressure. Dilation of cerebral blood vessel, आपके ब्रेन में, खोपड़ी में ब्लड वेसल आपका क्या करेगा? डायलेट कर देगा। कॉग्निशन मीन्स लर्निंग एबिलिटी। राहुल दास, कॉग्निशन मीन्स लर्निंग एबिलिटी। Cognition means learning ability. Right? So responsible for the due to dilation of cerebral blood vessel. तो आपके खोपड़ी में ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थ्रोबिंग हेडेक। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब आपका पूरा सर दर्द हो जाएगा। तो डायलेशन ऑफ cerebral blood vessel leads to throbbing headache. Dilation of pulmonary blood vessel leads to decrease in the pulmonary artery pressure, and also causes the increase in the CSF pressure, increases the cerebrospinal fluid pressure. That's why due to headache. So that's why headache is due to the stretching of sensory nerve endings around the cranial artery. तो जो खोपड़ी में जो ब्लड वेसल है, cranial blood vessel, so they cause a dilation of cranial blood vessels, and that's why there is a stretching of sensory nerve ending and leads to headache. Histamine, by acting on a histamine 1 receptor, the endothelial cells causes rapid and short-lived vasodilation. By acting on a H2 receptor, slow but prolonged vasodilation on a smooth muscle. Direct relaxation of smooth muscle and capillaries and vein leads to decrease in the blood pressure. Marked flushing, मतलब गर्मी फील हो जाएगा। Marked flushing accompanied by sense of warmth in men. Increased capillary permeability leads to edema, reduction in the plasma volume. तो सूजन हो जाएगा वहाँ पे, और आपको सूजन हो जाएगा और आपके ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि हिस्टामाइन बाय एक्टिंग ऑन अ ब्लड वेसल को डायलेट करता है। डायलेट करने के कारण क्या होता है कि परमेबिलिटी उसका बढ़ता है, एंड इडिमा एंड रिडक्शन इन द प्लाज्मा वॉल्यूम। राइट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन ऑन द ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्यों पढ़ना है? बिकॉज इफ यू नो द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन, यू कैन अंडरस्टैंड द एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स फार्माकोलॉजी। अगर हिस्टामाइन ब्लड प्रेशर को कम करता है, तो एंटी हिस्टामाइन क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, लाइक दैट। तो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन है ना, हाइपोटेंशन which cannot be reversed by antihistaminic agent but can be reversed by adrenaline। क्या करता है यहाँ पे? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब क्या? हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कम करेगा। Hypotension means decrease in the blood pressure. So histamine, because of the blood vessel dilation, it will decrease the blood pressure. Now that decrease in the blood pressure will not be antagonized or will not be reversed by antihistaminic. Decrease in the blood pressure cannot be reversed by antihistaminic, but that can be reversed by adrenaline. तो adrenaline तो उसको
रिवर्स करता है, बट है ना. एंड रिमेंबर हिस्टामाइन एंड एड्रेनालिन दे आर नोन एज अ फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट. इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है. राइट नाउ हिस्टामाइन हैज अ ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन द स्किन. देयर इज अ ट्रिपल रिस्पॉन्स. तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है इन जीपैट एज वेल एज इन नाइपर. What is the triple response of histamine or following compound causes the triple response when injected subcutaneously? ऐसा क्वेश्चन GPAT 2023 में आ चुका है. तो there is one question GPAT 2023 on this. 24 में भी आ चुका है. जैसे मैंने बोला हिस्टामाइन 1 रिसेप्टर में हाउ मेनी नंबर ऑफ अमीनो एसिड डोमेन ना 348. तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, आपने डिस्कस किया है वो. राइट नाउ triple response means there are three response when you inject a histamine in the skin. So after injection of histamine subcutaneously 20 microgram, if you inject a 20 microgram histamine subcutaneously you will find a three responses. So first is nothing but the flush. So what is flush? So red line or redness is developed because of the local vasodilation. हिस्टामाइन क्या करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है. जहाँ पे इंजेक्ट किया वहाँ पे ब्लड वेसल डायलेट होते हैं, तो वहाँ पे आपको फ्लशिंग आता है, रेडनेस आता है. देन आफ्टर दैट देयर इज अ व्हील, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हील. लोकलाइज द स्वेलिंग एंड इडिमा, लोकलाइज द स्वेलिंग एंड इडिमा. एंड आफ्टर दैट देयर इज थर्ड रिस्पॉन्स नोन एज अ फ्लेयर. सो स्प्रेडिंग ऑफ दैट रेडनेस इन अ डिस्टेंट एरिया, मतलब nearby area. So triple response is a part of normal reaction to the injury. तो आपको अगर कोई इंजुरी होता है तो उसके अगेंस्ट में भी ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है. बट हिस्टामाइन व्हेन इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली प्रोड्यूसेस द ट्रिपल रिस्पॉन्स. इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. चलो, व्हाट इज द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन ऑन द हार्ट? व्हाट इज द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन ऑन द हार्ट? आपके हार्ट के ऊपर क्या एक्शन है? So it has a positive inotropic effect, positive inotropic and positive chronotropic. अभी ये मत पूछना what is a positive inotropic and positive chronotropic, because ये already अपन ने डिस्कस किया है in the cardiovascular drugs. So positive inotropic and positive chronotropic. So positive inotropic means what? So which है ना? So inotropic related with the heart force of myocardial contraction. So positive inotropic drug will increase the force of contraction of myocardium. Positive chronotropic drug will increase the heart rate. So increases the force of contraction and heart rate, therefore increases the sinus rate. तो ये क्या करता है? Sinus rate बढ़ता है और heart rate. Increase in the amplitude of ventricular contraction, right? And which increases the blood pressure, but that is for a short time. Peripheral, because of the peripheral vasodilation, the blood pressure is decreased. What is the action of histamine on smooth muscle? Smooth muscle के ऊपर क्या एक्शन है भाई इसका? Stimulate the smooth muscle which result in the contraction. Stimulation of smooth muscle leads to contraction. In case of bronchial, तो आपका जो bronchial smooth muscle है या फिर आपका जो bronchus या ट्रकिया है उसमें क्या करेगा? Smooth muscle contraction. That leads to bronchospasm. क्या करेगा? Bronchospasm. बायोफेजिक रिस्पॉन्स होना गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर का जो स्मूथ मसल है उसके ऊपर बायोफेजिक मतलब दो एक्शन है. हिस्टामाइन 1 रिसेप्टर के थ्रू गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है और हिस्टामाइन 2 के रिसेप्टर के थ्रू रिलैक्स करता है. तो बायोफेजिक रिस्पॉन्स होना गॉल ब्लैडर. बट ब्रोंकोस्पाज्म इन द ब्रोंकाई. यहाँ पे याद रखना हिस्टामाइन by acting on a histamine 1 receptor, histamine by acting on a histamine 1 receptor, histamine by acting on a histamine 1 receptor causes the bronchoconstriction or bronchospasm. Now adrenaline by acting on a beta 2 receptor
Histamine by acting on a H1 receptor causes the bronchoconstriction. Adrenaline by acting on a beta 2 receptor will cause bronchodilation, and these are the opposite effect. But histamine will act on its own receptor, adrenaline will also act on its own receptor. और ये क्वेश्चन वहां पे पूछा है. तो टाइप ऑफ एंटागोनिज्म बिटवीन histamine and adrenaline in the bronchus. Type of antagonism between histamine and adrenaline in the bronchial smooth muscle is known as a physiological antagonism. Is known as a physiological antagonism. याद रखना है, physiological antagonism. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Now what is the action of histamine on exocrine gland? तो अगेन इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल मेडिएटर फॉर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन. तो आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहाँ पे हिस्टामाइन क्या करता है, बाय एक्टिंग ऑन हिस्टामाइन 2 रिसेप्टर इंक्रीजेस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन. नाउ सीएनएस नर्वस सिस्टम में क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या इफेक्ट है. 2 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन कंटेनिंग हिस्टामाइन, histaminergic cells and mast cell. So histamine is considered as a walking amine in the brain. Histamine is a walking amine in the brain, very important neurotransmitter. So increases the sensitivity of cortical and cerebral areas for the excitation impulse. जो excitation impulse आएगा उसका sensitivity बढ़ता है. Histamine does not cross the blood-brain barrier and it is locally synthesized in the synapse, so it is considered as a neurotransmitter in the brain. देखो histamine जो है it is not synthesized in the brain. Sorry, histamine does not cross blood-brain barrier, so it is synthesized locally, and it is synthesized locally and act as a neurotransmitter in the brain. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो. Miscellaneous action, है ना, miscellaneous action of histamine to also affect on a lymphocytes via histamine 2 receptor. इसका absorption, distribution, metabolism, elimination देखो. It is a well absorbed from the GIT. Histamine is metabolized by 2 enzymes as I told you earlier also. Methyl histamine by imidazole N-methyl transferase and by MAO to the 1-methyl imidazole acetic acid. So 1-methyl imidazole acetic acid and imidazole and methyl histamine, that is a metabolite. Adverse reaction क्या है इसके? Adverse reaction of histamine, so they are attributed to the pharmacological response. तो extension of pharmacological response वही उसके adverse effect होंगे. Due to its pharmacological action, it can produce a hypotension, flushing मतलब क्या? फीलिंग ऑफ वार्म, गर्म फीलिंग होता है, हेडेक, देन विजुअल डिस्टर्बेंसेस, डायरिया, डिसअपनिया मतलब क्या, डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, ब्रोंकोस्पाज्म. दीज आर द एडवर्स इफेक्ट. नाउ यूज क्या है इसका? हिस्टामाइन इज नो मोर यूज्ड नाउअडेज, बट प्रीवियसली इट वाज यूज्ड टू स्टडी द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, टू स्टडी द टू डायग्नोज द फियोक्रोमोसाइटोमा, टू डायग्नोज द फियोक्रोमोसाइटोमा. प्रीवियसली इसके यूज किए जाते थे, लेकिन नाउअडेज हिस्टामाइन इज नो मोर यूज्ड. ओके, बट इट्स एगोनिस्ट लाइक बीटा हिस्टिडीन हाइड्रोक्लोराइड. ये जो ड्रग है अभी भी मार्केट में चल रहा है, बीटा हिस्टिडीन हाइड्रोक्लोराइड. व्हाट इज दैट? इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ हिस्टिडीन and used to reduce the frequency of episodes of vertigo in a patient with the Menard syndrome. Menard syndrome क्या होता है? So what is Menard syndrome? So it is a syndrome, it is a disorder of your ear का disorder है, and in that there is an accumulation of fluid in the ear and which leads to vertigo and vomiting. चक्कर आता है आपको उसमें और वोमिटिंग भी हो सकता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एयर में फ्लूइड होता है. तो दैट इज रिलेटेड विद द Menard syndrome. नाउ ड्रग विच कॉजेज द वैसोडाइलेशन improves the blood flow in the labyrinth and brainstem, and adverse effect क्या है इसके? बीटा हिस्टीन के, that can cause ulcers and bronchial asthma. Only agonist drug used, histamine agonist is a बीटा हिस्टीन हाइड्रोक्लोराइड. हाइड्रोक्लोराइड छोड़ दो,
नाम है बीटा हिस्टीडीन, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. व्हाट इज अ बीटा हिस्टीडीन? इट इज अ हिस्टीडीन, इट इज अ हिस्टामाइन substituted histamine, or you can say histamine agonist. तो नेक्स्ट देखो, now anaphylactic shock. What is mean by anaphylactic shock? So histamine causes the anaphylactic shock. Anaphylaxis is used to denote the clinically medical emergency. Actually anaphylaxis is a medical emergency. Now anaphylaxis क्यों होता है? Because of the, it may be because of the drugs, foods, chemical, latex, insect, reptile bites, and anaphylaxis is mediated by immunoglobulin E. It is a type 1 hypersensitivity. It is a type 1 hypersensitivity. मान लीजिए, है ना, मान लीजिए आप क्या है कि इफ यू आर एलर्जिक टू समथिंग, आपको कोई किसी चीज का एलर्जी है, जैसे होता है ना आजकल ये एलर्जी वगैरह है ना, जो सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं बॉलीवुड में, है ना, जैसे प्रियंका चोपड़ा हो गया, या फिर कटरीना कैफ हो गया, या फिर ये जो सो कॉल्ड इलाइट लोग है ना, उनको ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है. मतलब उनको दूध पिया तो उनको डायरिया होता है, दैट इज ना, मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस है किसी को, जैसे प्रियंका चोपड़ा को लैक्टोज इंटॉलरेंस है ना. तो वैसे ही सम है ना, पीनट बटर का उनको एलर्जी होता है. किसी और एक हीरोइन है, उनको याद नहीं आ रहा मुझे, उसको पीनट बटर का एलर्जी है ना. मतलब क्या है ना, एग्जाम्पल समझो, बात को समझो. यहाँ पे क्या है कि इफ, है ना, फर्स्ट टाइम जब वो हीरोइन ने पीनट बटर खाया तो उसको कुछ नहीं हुआ, बट उसके बॉडी ने वो पीनट बटर को एज एंटीजन ट्रीट किया, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाई, दैट इज एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई. और जब सेकंड टाइम उसने पीनट बटर खाया तो उसके शरीर के ऊपर रैशेस डेवलप हुए, रैश ना, वहां पे है ना, रैश एलर्जी हो गए, दैट इज नोन एज एनाफिलैक्सिस. एनाफिलैक्सिस मींस व्हाट? सो something is there, antigen you can say. So antigen first time when you trigger, first time antigen will be in your body, so body against that antigen will synthesize antibody, that is immunoglobulin E. And when second time you will expose your body to the antigen, so at that time antigen antibody reaction will be there. There is a degranulation of mast cell, release of histamine, bradykinin, which can cause allergy, asthma, bronchodilation, bronchoconstriction, vasodilation, etc., etc., edema, like that, swelling in. So anaphylaxis are caused by various agent like drugs. ड्रग का एग्जांपल कौन है? जैसे एनाफिलैक्सिस caused by पेनिसिलिन. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक क्या है? सम पीपल दे आर एलर्जिक टू द पेनिसिलिन. फूड, केमिकल्स, लैटेक्स, है ना, इंसेक्ट. इंसेक्ट मतलब क्या? आपको अगर मधुमक्खी ने काट लिया तो आपको एलर्जिक होता है. रेप्टाइल बाइट्स, बिच्छू, मुझे बिच्छू लड़ गए रे, मेरे पीछे पड़ गए, वो बिच्छू ने काट लिया तो आपका एलर्जी वगैरह हो जाएगा. ठीक है. विच इज मेडिएटेड बाय इम्यूनोग्लोबिन ई. सो हिस्टामाइन इज द मोस्ट पोटेंट मेडिएटर ऑफ दिस. ऑल ऑफ दीज आर बिकॉज ऑफ द हिस्टामाइन. कौन सा माइन? हिस्टामाइन. ठीक है. नाउ symptoms of anaphylaxis or symptoms of allergy includes laryngeal edema. laryngeal edema मतलब क्या? आपका गला कोई दबा रहा है ऐसा, है ना, ब्रोंकोस्पाज्म, है ना, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. The term anaphylactoid is also similar to the anaphylaxis, but in an anaphylactoid there is no immunoglobulin E. In anaphylactoid reactions are caused by hyperosmotic or hypotonic solution, iodine and dye. Now what is the treatment? इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम 4 या 5 बार जीपैट में क्वेश्चन आ चुका है. मिनिमम 4 or 5 times question is there from this part. So what is the drug of choice in case of anaphylactic shock? So remember adrenaline. कौन सा? adrenaline. adrenaline मतलब क्या? epinephrine or adrenaline. So adrenaline is a drug of choice. It is a drug of choice in case of anaphylactic shock. So adrenaline in a proportion of 1:10,000 dilution. मतलब यहाँ पे adrenaline का proportion है और ये उसका saline का proportion है. 1:10,000 drug. It is a drug of choice in a anaphylactic shock. Already question बहुत बार आ चुका है, मैं repeat कर रहा हूँ. Adrenaline is a drug of choice in a anaphylactic shock. Along with the adrenaline, glucocorticoids are used. Some antihistaminic can be used.
glucocorticoids, antihistaminic, bronchodilator, and intravenous fluids. Treatment is depending upon the symptoms and condition of patient. Target for preventing the histamine action. तो आपका हिस्टामाइन का एक्शन ब्लॉक करने के लिए क्या टारगेट है आपके पास? तो टारगेट्स, फर्स्ट, यू कैन प्रिवेंट द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ट्रिगर्ड विच रिजल्ट इन द ट्रिगरिंग ऑफ हिस्टामाइन. मतलब अगर आप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन प्रिवेंट कर सकते हो तो हिस्टामाइन रिलीज नहीं होगा एंड उसका एक्शन नहीं मिलेगा आपको. प्रिवेंट द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, फर्स्ट टारगेट. सेकंड टारगेट, यूज द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट लाइक एड्रेनालिन. ये क्वेश्चन भी 3 बार आ चुका है, राइट? सो एड्रेनालिन एंड हिस्टामाइन दे आर फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ ईच अदर, है ना. टाइप ऑफ एंटागोनिज्म ऑलरेडी अपन ने जनरल फार्माकोलॉजी में देखा है. फिजिकल एंटागोनिज्म, केमिकल एंटागोनिज्म, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म एंड फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म, ये ऑलरेडी देखा है अपन ने, ठीक है. नाउ अगेन, बाय इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टामाइन यू कैन डिक्रीज द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन. हिस्टामाइन रिलीज हो गया, होने दो, मेटाबोलाइज कर जाएगा, बट इट इज नॉट क्लिनिकली इफेक्टिव. So you can block the histamine action by blocking the receptors like histamine 1, 2, 3 to block the receptor of histamine, right? That's how you can manage the action. यहाँ पे इसी स्लाइड में आपके 2 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं ऑलरेडी, और जो ऑलरेडी आ चुके प्रीवियस ईयर में. रिमेंबर, एड्रेनालिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, एंड देन टाइप 1 hypersensitivity or anaphylaxis is caused by histamine and mediated by immunoglobulin E. है ना. Histamine and adrenaline, they are they are the physiological antagonists. इसके ऊपर भी यहाँ पे मतलब एक ही स्लाइड में आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखो, ड्रग्स यूज्ड इन द, है ना, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग. कौन से ड्रग? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग. तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्ट कौन है, हिस्टामिनर्जिक एंटागोनिस्ट कौन है? पहला है हिस्टामिन एगोनिस्ट. हिस्टामिन एगोनिस्ट मतलब क्या? दे विल हैव हिस्टामाइन लाइक एक्शन. जैसे नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट ऑफ हिस्टामाइन, दे विल स्टिमुलेट हिस्टामाइन 1, हिस्टामाइन 2, हिस्टामाइन 3. नॉन सेलेक्टिव हिस्टामाइन एंड बीटा हिस्टामिन. अगर आपको सिलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव का डिफरेंस पता नहीं तो बहुत इजीली मैं बोलता हूँ. मान लीजिए आपके ग्रुप है प्रैक्टिकल का, आप जो प्रैक्टिकल करते हो उसमें एक ग्रुप है, तो उसमें, है ना, उसमें 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, ठीक है. आपका जो प्रैक्टिकल का ग्रुप है उसमें 3 लड़के हैं और 1 लड़की है ना. और वो जो लड़की है वो तीनों के साथ में ही बात करती है, तीनों को ही, मतलब तीनों के साथ में बात करती है, तो वो हो गई नॉन सिलेक्टिव. अगर वो लड़की सिर्फ, है ना, जैसे मान लीजिए हिस्टामाइन 1, है ना, H1, H2, H3, ये तीन क्या है, लड़के हैं आपके प्रैक्टिकल के ग्रुप में, और 1 लड़की है जो 1, 2, 3 तीनों से बात करती है, तो बोलने का नॉन सिलेक्टिव, है ना. अगर वो लड़की सिर्फ 2 के साथ में बात करती है, मतलब H2 के साथ में बात करती है, तो उसको बोलेंगे सिलेक्टिव, है ना. और वो लड़की अगर तीनों के साथ में भी बात करती है लेकिन उसको H3 को बात करने के लिए पसंद आता है, मतलब वो बात तो सबसे करती है लेकिन H3 से बातें करना उसको ज्यादा पसंद है, तो उसको बोलेंगे प्रेफरेंशियल, है ना. यहाँ पे 3 टर्म क्लियर होते हैं आपके, नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव एंड प्रेफरेंशियल. नॉन सिलेक्टिव मतलब क्या? इफ ए ड्रग इंटरेक्ट विद द ऑल रिसेप्टर, ऑल, है ना, इफ ड्रग इंटरेक्ट विद द ऑल रिसेप्टर, दैट इज नॉन सिलेक्टिव. दैट इज अ नॉन सिलेक्टिव. नाउ selective means what? If drug interact with the one of the 3 receptor, है ना, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. अगर वो सिर्फ 1 या फिर सिर्फ 2 से या फिर सिर्फ 3 से ही इंटरेक्ट करता है, उसको बोलने का सिलेक्टिव. एंड प्रेफरेंशियल किसको बोलने का? मतलब if drug interact with the all of 3 receptor but it would like to interact more with the histamine 2 receptor, so in that case you can call preferential. ठीक है. तो लड़की का एग्जांपल लेंगे तो इजी हो जाता है, ठीक है. आपके ग्रुप में 3 लड़के हैं, 1 लड़की आपका एक प्रैक्टिकल का ग्रुप है, 3 लड़के हैं, उसमें कौन सा है? H1 है, H2 है, H3 है, और 1 लड़की है,
है ना, तो वो लड़की तीनों के साथ में बात करती है, इंटरेक्ट करती है, तो उसको बोलने का नॉन सिलेक्टिव। अगर वो लड़की सिर्फ S2 के साथ में ही बात करती है, उसको बोलने का सिलेक्टिव। और वो लड़की तीनों के साथ में बात करती है लेकिन उसको S3 से बात करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसको बोलने का प्रेफरेंशियल। तो मस्त एग्जाम्पल बनाया हुआ है। तो नॉन सिलेक्टिव में देखो हिस्टामाइन बीटा एस्पिरिन। सिलेक्टिव H1 एगोनिस्ट, मतलब ये लड़की सिर्फ H1 के साथ में ही बात करती है, तो यहाँ पे 2 मिथाइल हिस्टामाइन, 2 प्रीडिल इथाइलामाइन, 2 थायोलिल इथाइलामाइन, दैट इज अ सिलेक्टिव H1 एगोनिस्ट। सिलेक्टिव H2 एगोनिस्ट मतलब ये लड़की सिर्फ H2 के साथ में बात करती है। डायमाप्रिट, देन इप्रोमिडिन, देन सिलेक्टिव अल्फा, सिलेक्टिव H3 एगोनिस्ट, है ना, अल्फा मिथाइल हिस्टामाइन, है ना। तो एगोनिस्ट जो है हिस्टामाइन एगोनिस्ट, दे हैव वेरी लिमिटेड यूज, दे आर नॉट हैविंग एनी थेरापेटिक यूज। तो ये एगोनिस्ट में से सिर्फ पहली कैटेगरी जो है बीटा एस्टिडीन वगैरह, उसका थोड़ा बहुत यूज है। बीटा एस्टिडीन इज यूज्ड इन द मिनार सिंड्रोम और इज यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट used in the treatment of vertigo, चक्कर जब आता है तो उसमें यूज करते हैं बीटा एस्टिडीन। रेस्ट ऑफ द ड्रग्स आर नॉट यूज्ड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, हिस्टामाइन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, हिस्टामाइन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और एंटी हिस्टामिनिक्स, इसको ही अपन बोलते हैं एंटी हिस्टामिनिक, और ये इंपॉर्टेंट है। और इनको ही बोलते हैं अपन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशन, ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ योर आपका जो कोल्ड एंड फ्लू होता है उसमें भी ये एंटी हिस्टामिनिक यूज करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड एज अ कफ सप्रेसेंट, है ना। तो देखो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और H1 रिसेप्टर ब्लॉकर और एंटी हिस्टामिनिक, सो दीज 3 कैटेगरी, है ना। ये तो histamine receptor antagonist, so in that you have highly sedative some, है ना। तो याद रखना है आपको यहाँ पे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो कन्वेंशनल एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है और फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, तो दीज आर ना कन्वेंशनल एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स और फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। कन्वेंशनल और फर्स्ट जनरेशन, कन्वेंशनल और फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, देयर मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट इज नथिंग मतलब सेडेशन। उनका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है? सेडेशन। तो जो कन्वेंशनल एंटीहिस्टामिनिक है उनका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है सेडेशन, मतलब वो आपको नींद लाएगा, दे विल प्रोड्यूस अ ड्राउजीनेस एंड सेडेशन। आउट ऑफ दैट सम ड्रग आर हाईली सेडेटिव, सम ड्रग आर हाईली सेडेटिव। एग्जांपल इज डाइफेन, हाइड्रामाइन, डायमिन हाइड्रेनेट, प्रोमिथाजिन एंड हाइड्रोक्साजिन, है ना। डाइफेन हाइड्रामाइन, डायमिन हाइड्रेमेट, डायमिन हाइड्रेनेट, प्रोमिथाजिन एंड हाइड्रोक्साजिन, दे आर हाईली सेडेटिव ड्रग। ये बहुत ज्यादा नींद लाएंगे आपको, हाईली सेडेटिव। तो आउट ऑफ दैट डायफेन हाइड्रामाइन इज यूज्ड एज अ कफ सप्रेशन, है ना। प्रोमिथाजिन इज आल्सो यूज्ड इन द कफ, है ना। तो हाइड्रोक्साजिन इज अ एंटी एलर्जिक, ठीक है। तो दे आर हाईली सेडेटिव एंड दे आर नॉट इंडिकेटेड इन द ट्रक ड्राइवर्स और मशीन ऑपरेटर्स, है ना। अगर कोई मशीन ऑपरेटर है, ट्रक ड्राइवर है, उसको आपने दे दिया डायफेनाइट्रामाइन, तो वो क्या करेगा? वो सेडेशन करेगा, उसको आएगी नींद, तो वो ट्रक को दूसरे को ठोक देगा, है ना। तो वो भी मरेगा, दूसरों को भी लेके जाएगा। तो दैट्स व्हाई कन्वेंशनल एंटीहिस्टामिनिक और फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द और दे शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड इन द डेलिकेट मशीन ऑपरेटर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स, ठीक है, बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस सेडेशन। तो उसमें के मॉडरेटली सेडेटिव है, ये करेंगे सेडेशन लेकिन कम मात्रा में करेंगे। तो फिनरामाइन, सिप्रोएप्टिडिन, मेक्लोजिन एंड सिनर्जिन, मेक्लोजिन, सिनर्जिन, साइप्रोएप्टिडिन, दीज आर द माइल्ड सेडेटिव एंड दे आर द मॉडरेट सेडेटिव। सम आर द माइल्ड सेडेटिव, मतलब ये भी सेडेशन करते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, है ना। क्लोरफिनरामाइन, डेक्सक्लोरफिनरामाइन, ट्रिप्लो, है ना, ट्राइप्रोलिडिन एंड सिलामस्टिन, है ना। मतलब क्या कि यहाँ पे और एक बार बोलता हूँ मैं आपको क्लियर करके,
Now, all these three are known as a first generation. All these three are known as a first generation antihistamine. So in that you have highly sedative like diphenhydramine, diamine-iodinate, promethazine, hydroxylate. Moderately sedative मतलब उससे थोड़ा कम सेडेशन करेंगे. Phenramine, ciproheptadine, meclozine and synergine. Mild sedative, they will also produce sedation but they are very less, बहुत ही कम. Chlorpheniramine, then dexchlorphenramine. Dexchlorphenramine क्या है? क्लोरफेनारामाइन का ये डेक्स्ट्रो डेरिवेटिव. देन ट्राइप्रोलिडीन एंड सिलामस्टिन. नाउ इनको बोलते हैं अपन फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स. इनको ही बोलते हैं अपन फर्स्ट जनरेशन और उनको ही बोलते हैं अपन कन्वेंशनल एंटीहिस्टामिनिक. कन्वेंशनल एंटीहिस्टामिनिक और फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक. नाउ सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक और नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामिन. सेकंड जनरेशन वाली जो ड्रग है वो सेडेशन एज एडवर्स इफेक्ट नहीं है उनको. तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन आ चुका है. वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड जनरेशन ड्रग और व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक विल नॉट प्रोड्यूस सेडेशन एज एडवर्स इफेक्ट. ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको. तो रिमेंबर यहाँ पे देखो फेक्सोफेनिडीन, लोरेटिडीन मतलब डीन है ना, डेसलोरेटिडीन मतलब लोरेटिडीन का ये डेक्स्ट्रो डेरिवेटिव कौन है? डेस्लोरेटिडीन. तो देखो डीन आ गया. देन सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन. लिवोसिट्रिजिन क्या है? इसका लिवो डेरिवेटिव. तो डीन जिन लास्टिन है ना. यहाँ पे याद कैसे रखता है ना? डीन जिन. डीन मतलब क्या? फेक्सोफेनिडीन, लोरेटिडीन, डेस्लोरेटिडीन. जिन मतलब क्या? सिट्रिजिन एंड लिवोसिट्रिजिन. एंड लास्टिन मतलब क्या? आजालास्टिन, मिजोलास्टिन एंड इबास्टिन. तो नॉन सेडेटिंग हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर और सेकंड जनरेशन हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर कैसे याद रखना है? डीन, जिन एंड लास्टिन. डीन, जिन एंड लास्टिन. तो डीन मतलब फेक्सोफेनिडीन है ना. ये तीन वाले क्या है? डीन है, डी आई नहीं. डीन ये क्या है? जिन है, दो जिन है. डीन, जिन एंड लास्टिन. तो डीन, जिन, लास्टिन सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन. चलो क्लासिफिकेशन हो गया और एक बार देख लेते क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन. सो केमिकल क्लासिफिकेशन पहला क्या था है ना? पहला था अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन. सेकंड क्लासिफिकेशन देखो केमिकल क्लासिफिकेशन. सम ऑफ देम आर इथेनॉलोअमाइंस, डेरिवेटिव्स ऑफ इथेनॉलोअमाइंस. पहला क्लास है. इसमें कौन है? एग्जांपल डाइपेनाइट्रामाइन एंड डाइमेनाइड्रेनेट. तो डेरिवेटिव ऑफ इथेनॉलोअमाइंस. सेकंड अल्काइल अमाइंस. तो क्लोरफेनारामाइन एंड ट्राइप्रोलिडीन. देन इथिलीन डायमाइंस में आता है मेपायरामाइन एंड एंटाजोलिन. पाइपरेजिन्स इसमें आता है हाइड्रोक्सिजिन, मेक्लाइजिन, सेट्रिजिन एंड सिनर्जिन. ठीक है. देन फिनोथाइजिन्स. देखो फिनोथाइजिन मतलब 3 रिंग स्ट्रक्चर होता है. सो फिनोथाइजिन डेरिवेटिव प्रोमिथाजिन एंड ट्राइमेपराजिन. देन पाइपेरिडीन डेरिवेटिव. पाइपेरिडीन में आता है सिप्रोहेप्टिडीन, लोरेटिडीन, फेक्सोफेनिडीन. तो देखो डीन वाले जो है ना, डीन यहाँ पे देखो डी आई नहीं, पिपेरिडीन्स, पाइपेरिडीन्स. तो यहाँ पे भी डीन है. सो पाइपेरिडीन डेरिवेटिव क्या रहेगा? सिप्रोहेप्टिडीन, लोरेटिडीन एंड फेक्सोफेनिडीन. ठीक है. थायजिन में क्या है ना? जेड आई नहीं है ना. जेड आई में देखो यहाँ पे ना प्रोमिथाजिन, है ना, ट्राइमेप्राजिन. पिपेराजिन्स, हाइड्रोक्सिजिन, मेक्लाजिन, सिनर्जिन और सिट्रिजिन. देन है ना डाइबेंजोजेपिन डेरिवेटिव इज डॉक्सापिन. अगेन क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द जनरेशन. पहले बोला फर्स्ट जनरेशन हाईली सेडेटिव देखा है अपने, मॉडरेटली सेडेटिव भी देखा है, माइल्ड सेडेटिव इन सेकंड जनरेशन. ये ऑलरेडी क्लासिफिकेशन हमने देखा है. तो नाउ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटीहिस्टामाइंस. तो एंटीहिस्टामाइन के एक्शंस देखेंगे फार्माकोलॉजिकल. तो बिकॉज ऑफ द हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकिंग,
The actions of histamine on a smooth process GIT, they will block the histamine action on the, they will block the action of histamine on the GIT, bronchus, uterus, blood vessels, along with the inhibition of salivary secretion. मतलब जो भी हिस्टामाइन का एक्शन है ब्रोंकिस के ऊपर, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, उसको ब्लॉक करेंगे. जो भी हिस्टामाइन का एक्शन है ब्लड वेसल के ऊपर, वैसोडाइलेशन, इंक्रीज इन द परमेबिलिटी, वो ब्लॉक करेंगे. तो दे विल प्रिवेंट द इचिंग. सो एंटीहिस्टामिनिक विल प्रिवेंट द इचिंग, एडिमा एंड यूट्रिकैरिया, increase the gastric motility due to histamine, and they will cause also prevent the hypotension produced by histamine releasing drug. तो जो हिस्टामाइन है वो उसका जो एक्शन है हाइपोटेंशन, hypotension है because histamine produces the hypotension. So these antihistaminic drugs, they will block the actions of histamine on a GIT, you know, on a, they will prevent the itching, edema, urticaria and hypotension produced by histamine or histamine releasing drugs. Okay, ये हो गए इसके एक्शन. But bronchospasm and hypertension developed because of the mediators other than histamine are not adequately blocked. मतलब क्या कि antihistaminic drug, they will not block the bronchospasm or hypotension produced by bradykinin, serotonin, like that. मतलब antihistaminic क्या करेंगे, सिर्फ histamine रिसेप्टर को ब्लॉक करके जो हिस्टामाइन की मेडिएटेड एक्शन है वही ब्लॉक करेंगे. बाकी ब्रैडिकाइनिन है ना, बाकी जो है आपका ब्रैडिकाइनिन का बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन, उसकी मेडिएटेड एक्शंस नहीं ब्लॉक करेंगे. ठीक है. अदर एक्शंस देखो, अदर एक्शंस आर बिकॉज ऑफ द ब्लॉकिंग ऑफ अदर रिसेप्टर लाइक 5HT3 एंड अल्फा एड्रेनर्जिक एक्शन, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर. तो हिस्टामाइन रोजन रिसेप्टर है ना, histamine 1 receptor blockers or simply antihistaminic, they block the H1 receptor, they block the 5HT3 receptor, मतलब serotonin receptor, they also block the alpha receptor. Some of them are also anticholinergics, they are also muscarinic blocker, है ना, muscarinic blocker भी है. So antihistaminic are histamine receptor blocker, alpha blocker, anti-muscarinic receptor blocker as well as 5HT3 receptor blocker. So because of blocking of alpha receptor, muscarinic receptor and 5HT3 receptor, they produce the adverse effect. तो ठीक है, उनका काम क्या है, हिस्टामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करना, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करना. लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि है ना, वाडियो काम कर रहे हैं. वाडियो काम कौन सा कर रहे हैं कि वो अल्फा को भी ब्लॉक कर रहे हैं, मस्कनिक को ब्लॉक कर रहे हैं, 5HT3 को भी ब्लॉक कर रहे हैं. वो जो इनको ब्लॉक करेंगे तो उनके एडवर्स इफेक्ट आएंगे. तो व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट, याद रखना है आपको. सेडेशन एंड hypnosis. Sedation and hypnosis. The most common adverse effect of antihistaminic is a sedation. Conventional antihistaminic or first generation. CNS depression is a common side effect of conventional antihistaminic. They can cause sedation, drowsiness, and they can cause sleep. Sometimes they are beneficial in case of allergy condition. अभी ये जो adverse effect है ना, ये allergy अगर हो गया आपको तो उसमें ये beneficial है, but they are the troublesome in the other. जैसे अगर कोई ट्रक ड्राइवर है या फिर कोई मशीन ऑपरेटर है, उसमें अगर देंगे तो वो उसका हाथ चला जाएगा. अगर कोई मशीन ऑपरेटर है, वो कटिंग मशीन में इन्वॉल्व है, उसको आपने दे दिया डाइफेनाइट्रामाइन, वो सिरप पी के गया वहाँ पे, है ना, लकड़ी कट करने के बजाय हाथ ही कट करके आया, तो ड्राउजीनेस हो गया. तो टॉलरेंस टू दिस एक्शन में डेवलप विद द कंटिन्यूस यूज ऑफ ड्रग. टॉलरेंस भी उसको उस एक्शन को. तो सेडेशन में गेट टॉलरेंस. CNS stimulation. Occasionally few drug can cause stimulation of CNS which results in the restlessness, tremors and insomnia and activate the latent epilepsy.
अगर कोई इपिलेप्टिक पेशेंट है तो उसमें ये एपिलेप्सी एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, एक्टिवेट कर सकते हैं. दीज आर द एक्शंस ऑफ, है ना. Next point we'll see what is the action on an autonomic nervous system. Now what is the action on an autonomic nervous system? So majority of antihistaminic has a anti-muscarinic action. Most of the जो antihistaminic drug है, जो H1 receptor blockers है, उनको anti-muscarinic activity है, मतलब है ना, जैसे एट्रोपिन जैसे एक्शन करेगा, है ना. So anti-muscarinic activity, and because of that they can cause dryness of mouth. So antazoline and phenydiamine. Antazoline and phenydiamine is also alpha blocking activity. So then another effect, anti-motion sickness effect. Anti-motion sickness effect. So motion sickness क्या होता है? Motion sickness बहुत लोगों को पता नहीं. So motion sickness क्या है? आप बोलते हो ना, मैं बस में ट्रॅव्हल नाही करती हो, है ना, बाबा मी बसमध्ये जात नाही कारण मला बस लागते. कुठून लागते काय बाबा तुला मला माहित नाही. म्हणजे काय, बरेच जण बसमधनं ट्रॅव्हल करत नाहीत. बहुत सारे लोग बस से ट्रैवल नहीं करते. क्यों? क्योंकि उनको बस में क्या है, उल्टी आता है, उनको वोमिटिंग आता है. क्यों आता है उल्टी? देखो अपने इंडिया है, इंडिया के रास्ते तो कमाल है, और रास्ते में गड्ढा है या गड्ढे में रास्ता है ये समझ में नहीं आता अपने को, और ऊपर से ये बस रहता है खचाखच भरा हुआ, वहाँ से एक तो वेंटिलेशन नहीं रहता उसमें ना. बस जा रहा है, आप बैठे हो, गड्ढा आ गया, आप हिल गए ना, कंटिन्यूसली आप हिल रहे हो, बस इधर उधर जा रहा है, आप कंटिन्यूसली हिल रहे हो, तो आपका जो सर है वो हिल रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस ऑफ योर बैलेंसिंग सेंटर, है ना, आप हिल रहे हो तो आपका ब्रेन क्या करता है, विल ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ. तो बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस शेकिंग ऑफ योर हेड देयर इज अ कंटिन्यूस स्टिमुलेशन टू द balancing center. So balancing center get activated, and nearby to the balancing center there is a vomiting center, and because of the continuous stimulation of vomiting center, so you get a vomiting. That is known as a motion sickness. Motion sickness मतलब क्या है? Vomiting due to traveling because of the continuous shaking of your head in the bus. Now it is related to vestibular difference. Vestibular disturbance. It is related to vestibular disturbances. Drugs used in this motion sickness is diphenhydramine, then promethazine, piperazine. They are effective, but these are not effective in the vomiting due to labyrinth disturbance. Anti-Parkinson effect. Anti-Parkinson effect due to muscarinic blocking. Due to muscarinic blocking, histamine receptor blocker also has anti-Parkinson effect. Cardiovascular action. Cardiovascular के ऊपर क्या है? Beyond the therapeutic dose, antihistaminic has a membrane stabilizing effect. ज़्यादा डोज मतलब थेरेपेटिक डोज से ज़्यादा यूज करेंगे तो वो एंटी एरिथमिक ड्रग एज ए एक्ट होती है. दे हैज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट लाइक क्विंटिन, मतलब एंटी एरिथमिक ड्रग. लोकल एनेस्थेटिक एक्शन, promethazine and diphenhydramine has some sort of local anesthetic activity, but it is not used in the clinical practice. EDME देखो, absorption, distribution, metabolism, elimination. They are absorbed by oral route as well as parenteral routes. Out of these, histamine receptor blocker meclizine has a longer duration of action. Meclizine is long acting piperazine derivative. These compounds are metabolized by hydroxylation and glucuronide conjugation and removed through urine. They are the microsomal enzyme inducer. ठीक है, यहाँ पे एक आधा क्वेश्चन आ सकता है आपको, जैसे मोशन सिकनेस वाला, राइट. Now adverse reactions of histamine 1 receptor blocker. Most common adverse effect बोला मैंने, sedation and apnosis. Along with it can produce a desudescence, diplopia. Diplopia मतलब डबल विजन. Diplopia मतलब क्या? डबल विजन. डबल विजन. जैसे मान लीजिए आपने कभी अल्कोहल पिया नहीं और एक आध बार आपने दोस्तों के रिक्वेस्ट पे आपने एक आध पैक मार लिया, तो आपको वो दोस्त एक नहीं दो दिखते हैं, तो वैसे डिप्लोपिया. ओके. मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट इज सेडेशन एंड हिप्नोसिस along with the diplopia,
एंड इम्पेयरमेंट ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन, आपका जो मोटर कोऑर्डिनेशन है वो इम्पेयर होगा, मतलब जिसने ड्रिंक किया ना वो देखो कैसे चलता है, हिलते डुलते चलता है, उसको प्रॉपरली पकड़ते नहीं आता किसी चीज को, वही मोटर इन कोऑर्डिनेशन एंड एक्स्ट्रापिरामिडल रिएक्शन. दैट्स व्हाई द histamine receptor blocker or H1 receptor antagonist, they are cautiously used in the truck driver or simply drivers or heavy machine operators, right? मस्करनिक एंटागोनिस्ट के कारण क्या है, दे कैन प्रोड्यूस ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, यूरिनरी है ना, ब्लैडर डिस्टर्बेंस, यूरिन रिटेंशन, इम्पोर्टेंस. जीआईटी के ऊपर आप चिपका दो 3 वाले, नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये तो आपके जन्म सिद्ध अधिकार है. फार्मेसी में एडमिशन ले लिया आपने तो ये जन्म सिद्ध अधिकार होता है आपका कि नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, एडोसिपेट आपको लिखना है, तो लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं. कार्डियक एक्शन क्या है, इट कैन प्रोड्यूस हाइपोटेंशन, सेंस ऑफ टाइटनेस इन द चेस्ट. मिसलेनियस में क्या है, इन स्पाइट ऑफ देयर एंटी एलर्जिक एक्शन, सम ऑफ देम आर आल्सो एबल टू प्रोड्यूस एलर्जी. वो एंटी एलर्जिक है लेकिन उनमें से कुछ जगह ऐसे कि वो खुद भी एलर्जी कर सकते हैं. दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स. ठीक है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स. आई होप यू आर गेटिंग. नाउ उनके थेरापेटिक यूजेस, यूज क्या है, उनकी यूज क्या है. सो दे आर यूज्ड इन द एलर्जिक डिसऑर्डर लाइक पोलिनोसिस, पोलन ग्रेन का एलर्जी हो गया इसमें यूज करेंगे. सीजनल हे फेवर, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोराइटिस, है ना, अगर स्किन के ऊपर आपको इक्जिमा वगैरह होगा, इक्जिमा, प्रोराइटिस, रीजनल एलर्जी. आल्सो यूजफुल इन द माइल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, मास्टोसाइटोसिस, मतलब एबनॉर्मल इंक्रीज इन द मास्ट सेल, मास्टोसाइटोसिस. अदर यूजेस क्या है, एज अ हिप्नोटिक, है ना, डाइफेनाइड्रामाइन, प्रोमेथाजिन, दे आर प्रोड्यूसिंग द हिप्नोसिस. एज अ एंटीइमेटिक, जैसे डाइफेनाइड्रामाइन, मेक्लाइजिन, दे आर यूज्ड एज अ एंटीइमेटिक. पार्किंसोनिज्म में डाइफेनाइड्रामाइन यूज करते हैं, प्रोमेथाजिन. एंटी मोशन सिकनेस में प्रोमेथाजिन यूज करते हैं, है ना. तो प्रोमेथाजिन का एक टैबलेट आता है, उसका नाम है एहोमिन टैबलेट. एक प्रोमेथाजिन 10 मिलीग्राम का एक टैबलेट आता है, एहोमिन 10 टैबलेट. अगर किसी को बस लगता है, बस में उल्टी होती है, तो उन्होंने क्या करना है, एहोमिन टैबलेट एक लेना है, खा लेना है और बाद में जाना है बस से, उल्टी नहीं होगा, सीधा ही होगा. ठीक है. एंटीडेसिव भी है, एंटीडेसिव में आपका डाइफेनाइट्रामाइन आता है एंड आल्सो यूज्ड इन द ड्रग इंड्यूस्ड एक्यूट डिस्टोनिया. सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक जो है, तो दे हैज अ हाई लिपिड सोल्युबिलिटी एंड हैव अ CNS adverse effect, drowsiness, in addition to the anticholinergic, anti-serotonergic and bradykinin effect. उसमें cetirizine, loratadine, fexofenadine, these are the drugs will not easily cross the blood-brain barrier. That is why they are non-sedative. Cetirizine, loratadine, and fexofenadine, they are not a sedative and they are not metabolized but excreted in the urine as such. उनका मेटाबॉलिज्म होता नहीं है और यूरिन से रिमूव किया जाता है. फेक्सोफेनेडिन इज प्राइमरली एक्सक्रीटेड इन द फीसेस. फेक्सोफेनेडिन आपके टट्टी से भी बाहर निकलता है. फेक्सोफेनेडिन इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ टर्फेनेडिन, तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. फेक्सोफेनेडिन इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ टर्फेनेडिन. सेट्रेजिन इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सिजिन, याद रखना है. इसकी यूजेस क्या है, यूज्ड इन द एलर्जिक रिनाइटिस but not in a vasomotor, used in the urticaria and dermatophagia, मतलब जो भी एलर्जिक रिएक्शन है उसमें उसका. Now use of antihistaminic because of the histamine receptor blocker, they are anti-allergic because of the anticholinergic property. They are used in the Parkinsonism, motion sickness and muscular dystonia. Because of the histamine 2 receptor blocker, they are used as a anti-ulcer drug. ठीक है, तो देखो because of the other uses क्या है कि drug of choice in the idiopathic pruritus, histamine 1 receptor blockers. Synergin is useful in the vertigo. देखो डाइफेनाइड्रामाइन पहला ड्रग है आपका, उसमें मस्करनिक ब्लॉकिंग भी है, सेडेशन भी करता है, एंटी मोशन सिकनेस भी एक्टिव है. इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड OTC ड्रग.
ओवर द काउंटर ड्रग। प्रोमिथाजिन है उसको भी सिमिलर एक्शन है एंड आल्सो हैज सम एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी एंड लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी। तो प्रोमिथाजिन क्या है, फिनोथाइजिन डेरिवेटिव, और फिनोथाइजिन को क्या बोलते हैं, लार्ज एक्टिव। क्लोरफेनोरामाइन वो भी क्या है, मस्कनिक ब्लॉकिंग करता है मॉडरेटली, सेडेशन आल्सो एंड एंटी मोशन आल्सो। तो but it can cause CNS stimulation also. Meclizine also produces the same, muscarinic blocking, moderately sedation and strong anti-motion activity, highly effective in the motion sickness. तो सिट्रेजिन जो है वो ये नहीं करता है, मस्कनिक ब्लॉकिंग नहीं करता है ना, दैट्स व्हाई ये सिर्फ एंटी एलर्जिक है। तो सिट्रेजिन, लोरेटिन, हेक्सोफेनिडिन दे आर ओनली एंटी एलर्जिक। तो दिस विल एंड योर। तो देखो सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक, ये देखो अभी एक स्लाइड बचा है। सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक, पहला है फेक्सोफेनिडिन, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ, तुमने देखा है फेक्सोफेनिडिन इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ टर्फेनेडिन। सो टर्फेनेडिन क्या है, इट इज अ फर्स्ट नॉन सेडेटिव एंटी हिस्टामिनिक वाज डेवलप्ड। So terfenadine was the first antihistaminic which was a non-sedative, but it is not used. It is a withdrawn from market because it produces the arrhythmia. कौन सा arrhythmia? Torsade day point, polymorphic ventricular tachycardia, ना? So that's why terfenadine, इसके ऊपर already 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। Terfenadine is a histamine 2 receptor blocker that is a withdrawn histamine 1 receptor blocker that is withdrawn from the market because of the torsade points. Hexapenidine does not cross the BPP, it is a non-sedative, non-antimuscarinic and cardiovasculative. Then loratadine, so longer acting selective peripheral H1 receptor antagonist, non-sedative. Desloratadine, yeah, desloratadine is an active metabolite of lorate. Cetirizine आपने देखा होगा, खाया भी होगा। Cetirizine is a metabolite of हाइड्रोक्सिजिन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। सिट्रीजिन इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सिजिन एंड सिट्रीजिन क्या है, रेजिन। सिट्रीजिन इज अ रैसिमिक मिक्सचर, सिट्रीजिन इज अ रैसिमिक मिक्सचर एंड उसका ही डेरिवेटिव होता है आपका लिवोसिट्रीजिन, लिवो इनोंशियोमर ऑफ सिट्रीजिन हैविंग लेस एडवर्सिटी। देन एजालास्टिन histamine 1 receptor antagonist and also prevent the release of histamine and inflammatory reactions triggered by histamine and other mediators. There is a bronchodilator property also. Ebastine, new generation antihistaminic, and that is also metabolized into active metabolite known as a carbastine. Then rupatadine, rupatadine, so antihistaminic with a additional platelet activating factor blocking activity used in the allergic rhinitis. यहाँ पे देखो लास्ट स्लाइड है, डायपेनाइट्रामाइन का ब्रांड नेम है बेनाड्रिल। बेनाड्रिल कप सिर्फ आपने लिया होगा कप में, तो उसमें डायपेनाइट्रामाइन होता है। तो देखो प्रोमिथाजिन का एक ब्रांड नेम होता है, प्रोमिथाजिन फेनरगन, फेनरगन नाम का इसका इंजेक्शन भी है, टैबलेट भी। ये क्यों ले रहा हो, कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आता है, तो सिलेक्टिव ले रहा हो, सभी नहीं ले रहा हो सिलेक्टिव। देखो है ना, प्रोमिथाजिन जो है उसका मैंने बोला था अहोमिन नाम का टैबलेट है, अहोमिन। देन फिनर है ना, फिनरामाइन मैलेट का एविल नाम का टैबलेट, एविल 10, एविल 20। देन क्लोरोफेनामाइन का जीट, प्रोजीट वगैरह कब सिरप में आता है। सेट्रिजिन में देखो अल्रेट टैबलेट सेट्रिज टैबलेट वगैरह। सिनर्जिन इसका ब्रांड नेम होता है सुजेरॉन, सुजेरॉन इज अ ट्रेड नेम ऑफ सिनर्जिन, टैबलेट है सुजेरॉन। ठीक है, दिस विल एंड योर कन्वेंशनल एंटीहिस्टामिनिक और H1 रिसेप्टर ब्लॉकर। टुमारो विल सी द ड्रग यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर, कल ड्रग यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर देखेंगे, फटाफट ये फिनिश कर देंगे, उसके बाद में सेरोटोनिन एंड रिलेटेड ड्रग्स। तो सी यू टुमारो।
आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।